Okay, we will start. So this subject is the fish products and value addition, and today topic is salting of fish. Salting of fish is a traditional method of fish preservation by which we can preserve the fish. Why we are preserving the fish? For to increase the shelf life of the fish, to increase the shelf life of the fish, as well as to store the fish for longer duration of time, or we can say to store the food for longer duration without affecting it. So salting is a method of a traditional method of fish preservation, in which what we are doing, we are applying a salt over the fish. So if we are applying a salt over the fish, the salt will penetrate inside the fish body. At the same times, whatever the water molecules will be there in the inside the fish body, it will release out. And this process will continue until and unless there will be equilibrium. Penetration of salt and release of water from the fish body. This process will continue until and unless the process is equilibrium. At the same times, whatever the microbes will be there on the surface of the fish, body, the microbes will be also killed. How they are killing? Due to the plasmolysis process. Plasmolysis phenomenon is there. And if the enzyme which is responsible for the spoilage, so that enzymes will be also inactivated. So this is about the salting. We will go and we will study in detail. So salting is a traditionally old method of fish preservation. Generally it is practiced as such or in combination. हम इसको salting as such भी कर सकते हैं. Salt है, मछली के ऊपर में डाल सकते हैं, या फिर salt solution है, मछली को हम उसमें dip कर सकते हैं. Either you can do as such, that is the salt dry crystal, salt crystal we can apply, or we can dip the fishes into the salt solution, or in combination with a canning. Canning is also a method of preservation. Then drying and smoking, or fermentation also is there, and fermentation process is also there. Fermentation preservation techniques is also there. So these methods, in these methods, we can also apply a salting. Okay, we can apply as such, either in the form of dry salt or a salt solution, or we can also do in combination. अगर हम canning करते हैं तो brine treatment डालते हैं, so there also we are doing a salting or blanching treatment. Drying करते हैं, so drying करेंगे तो उसमें भी हम salting करके and then we can go for drying. Smoking करते हैं, smoking में generally we are applying a salt, then we are doing drying and smoking. That three process. In fermentation we are also applying a salt. So we can do as such or in combination with the other methods of fish preservation, which is canning, drying and smoking. So this is about the salting. Then what is the principle behind this salting? How the fishes we are preserving for longer duration of time. What principle is involved? So the principle behind salting is, when we are introducing a sufficient quantity of salt over a fish flesh, over the surface of the fish. So what is the action of salt or the function of salt? This salt will slow down or delay the activity of bacteria as well as the enzyme, or even inactivate them. Either उसकी एक्टिविटी को, दैट मींस बैक्टीरियल एक्टिविटी को वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और एंजाइम एक्टिविटी को क्या करेगा, डिले कर देगा या रिड्यूस कर देगा, या नहीं तो फिर क्या करेगा, वो उसको इनएक्टिवेट भी कर सकता है. हाउ दे आर इनएक्टिवेटिंग? बाय रिड्यूसिंग द वाटर एक्टिविटी. व्हाट इज वाटर एक्टिविटी? What is water activity?
अरे यार बताओ, वाटर एक्टिविटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। What is water activity? Hello? 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 No one is telling. What is water activity? Hello? Hello? हेलो, कोई बोल नहीं रहे हैं यार। हमारी आवाज आ रही है? कुमार गौतम? Yes, sir. Then why you people are not replying? I am asking you, what is water activity? Sir, ratio of water vapor in. मतलब सब लगता है ऑन करके सो गए हैं क्या? हम ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा सो जाना है। सर पूछ रहे हैं, उसका कुछ नहीं रिप्लाई करना है। बताओ, व्हाट इज वाटर एक्टिविटी? Sir, percentage of water vapor. पिछले क्लास में भी हम बताए हैं, इससे पहले भी कितनी बार बताए हैं, स्टिल वाटर एक्टिविटी समझ में नहीं आ रहे हैं। ये क्यूरिंग हमारा है, दिस फिश प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडिशन, इसमें तो हमारा प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाटर एक्टिविटी। If we are preserving the fish, water activity is playing a role. So, what is water activity? किसी को नहीं मालूम? कुमार गौतम तो ट्राई किया। Ratio of partial vapor pressure of substance and water. अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम ग्रेजुएशन हम पढ़ रहे हैं तो जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास के दौरान में हम बताते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू फॉरगेट थ्रू आउट योर मींस graduation degree. Not only graduation, after that also you don't have to forget if you are preparing for competitive exam. So water activity, it is the ratio. What ratio? It is the ratio between the vapor pressure on the surface of the product to the water vapor pressure of pure water at same temperature. This, if you are not mentioning at same temperature, that means you are not defining water activity in correct way. So it is the ratio of water vapor pressure on the surface of the product or pure water at same temperature. So we are measuring. So how this enzyme and bacteria are inactivated? So this enzyme or bacteria are activated by reducing the water activity. How we are reducing the water activity? Because we are applying a salt over the fish flesh or fish body or fish surface. So what will happen? This salt will penetrate, at the same time this water from the fish body will release out. So if the water is releasing from the out, that means we are removing the water. So vapor pressure of the water of the surface of the fish will be lowered. So that's why we are reducing the water activity. So if we are lowering the water activity, the growth of bacteria will be also suppressed. So generally bacteria जो है
halophilic bacteria is also there. Generally, they grow at 0.75. If we are lowering less than 0.75 water activity, their activity we can stop. So activity lowering or delaying or reducing the activity of bacteria and enzyme, and even them inactivating bacteria and enzyme, this forms the basis of preservation by salting. So this is the principle behind salting, how salt is playing a role to preserve the fish. Then, as I told, this is the traditional method of fish preservation. In olden days, the peoples were using a different curing techniques, salting techniques. So one of the oldest method of fish preservation that peoples were followed in the beginning, so known as monocuring. In monocuring, generally this monocuring is applied on medium to small size species. In case of monocuring, what we are doing a curing without splitting the fish. फिश को क्या करते हैं, पेट को उसको हम स्लिट नहीं लगाते हैं, उसको स्लिट करके हम उसको ओपन नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, तो हेड जो है, गिल्स जो है, वो हेड, गिल्स एंड इंट्रेल्स और इंटेस्टाइन, दैट हेड along with head, gills, intestine or alimentary canal, whatever, we are removing from the fish. Intestine, entrails are removed by pulling out through the gill region. तो थोड़ा सा ये होता है ना, गल्फर, ओपरकुलम का रीजन, गिल को पकड़ के हम निकाल देते हैं, that is called as gibbing process, gibbing. Then fish is salted and kept in tanks. पहले छोटे छोटा मछली है, मीडियम टू स्मॉल, उसके गल्फर, गर्दन के पास जो है, वहां से गिल्स हटाएंगे, इंट्रेल्स हटाएंगे, देन वी आर अप्लाइंग ए सॉल्ट एंड कीपिंग ए टैग. So here the fish place is not exposed to this environment, means say for example on sand or sun. So here less chances of contamination. What we are doing, we are removing the gills, we are removing the entrails, and then keeping the salt and keeping in applying a salt and keeping into the tank. So there is a less chances of contamination. We are not keeping on the floor, we are keeping in the tank. So there will be less contamination. Here the yield will be 70% and product shelf life is 50 days. 50 दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं and we can consume. So this is monocuring. Now another method of curing in olden days was pit curing. जब मछलियां हमारे पास ज्यादा हो जाती थी तो हमारे पास उतना मींस नहीं होता था जो हम मार्केट तक पहुंच पाए और सारा मछली को सेल कर पाए. तो उस चीज में क्या करेंगे, we have to preserve the food, है ना. Like animals are also means talented. वो भी जब उसको फूड बहुत ज्यादा मिल जाता है, what dogs is doing, डॉग क्या करता है, वो फूड लेकर के चपाती लाएगा और मट्टी को डिग करेगा, सॉइल को डिग करने के बाद में उसमें वो छुपा के रख लेगा, जब उसको भूख लगेगी उसको वो वहां से हटाएगा और उसको फिर कंज्यूम करेगा. सो इन पिट क्यूरिंग क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ क्यूरिंग वी आर डिगिंग ए पिट. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मींस डिगिंग ए पिट. एक गड्ढा खोद लेंगे और गड्ढे के ऊपर में एक लाइनिंग डालेंगे. लाइनिंग जो डालेंगे दैट इज पाल्मायरा लीफ और कोकोनट लीफ. ये ओल्डन मेथड है, मींस ओल्डन डेज में जो मतलब फिशरमैन जो अप्लाई करते थे पिट क्यूरिंग. एक गड्ढा खोद दिया, उसके गड्ढे में पाल्मायरा लीफ और कोकोनट का लेयर एक बिछा दिया एंड देन उसमें मछली और सॉल्ट को मिक्स करते थे. फिशेस मिक्स्ड विथ ए सॉल्ट एट द रेशियो ऑफ 4:1. व्हाट डू यू मीन बाय 4:1? What do you mean by 4:1? 4 kg fish में 4 kg salt, 1 kg salt.
हाँ करेक्ट, 4:1, दैट मीन्स 4 kg salt है तो 4 kg fish है तो 1 kg salt we have to apply. So this fish and salt mixture we have to apply and keep into the digs. और 2 से 3 दिनों तक के लिए उसको छोड़ दिया जाता था और उसके बाद फिर उसको वहां से निकालते हैं and then we are packing into the bamboo basket and then transporting into the market without drying. Here drying is not takes place. Here quality of the product will be poor. Why? Because we are digging the pits on the beach. जो बीच है ना, हम लोग जो बीच गए थे, दीघा बीच गए थे, कहां, वो जो हमारा बीच वाला एरिया है, बीच एरिया में ही हम गड्ढा खोद करके पल्मेरा लीफ और कोकोनट लीफ का एक लेयर डाल करके उसमें मछली और सॉल्ट के मिक्सचर को 4:1 के रेशियो में डाल करके और 2 से 3 दिनों तक के लिए उसको कवर करके छोड़ देते थे एंड देन वहां से निकाल करके फिर बैम्बू बास्केट में भरते हैं। भरने के बाद उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते हैं ड्राइंग, बिना ड्राइंग किए हुए। इसीलिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है पुअर होता है, क्योंकि देयर इज अ चांसेस दैट सैंड विल कंटामिनेट, क्योंकि हम सैंड में रख रहे हैं, बीच पे रख रहे हैं, बीच के गड्ढे में रख रहे हैं, तो डेफिनेटली सैंड जो है मछलियों के संपर्क में आएगा, तो देन देयर इज अ चांसेस दैट सैंड विल कंटामिनेट योर प्रोडक्ट। And this pit curing product is having a shelf life of 20 days, not more than that. Mona curing 50 days, pit curing 20 days. Then another curing method in olden days that fishermen was followed is the Colombo curing. Colombo curing is a special product which is made for Sri Lanka. Sri Lankan country है, श्रीलंकन कंट्री के लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया जाता था उस समय में, ओल्डन डेज में, स्पेशल प्रोडक्ट। सो इट इज स्पेशल प्रोडक्ट। श्रीलंकन पीपुल्स इस प्रोडक्ट को बहुत मींस पसंद करते थे, उसको बहुत अच्छा लगता था। देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, स्पेशली दिस टूटीकोरिन और जो कोस्टल एरिया है हमारा तमिलनाडु, ईस्ट कोस्ट। सो दैट फिशरमैन पीपुल्स व्हाट they used to prepare Colombo curing, how they prepared. So here the preservation is done by means of pickling process. So how? So there is one plant is there. That plant name is Garcinia cambogia. Garcinia cambogia plant is having a fruit. That fruit is known as Malabar tamarind. What is tamarind? Malabar tamarind. Emily. Huh? Malabar tamarind. Emily sir. Emily. हाँ. So Malabar region का जो tamarind है, that plant's name is Garcinia cambogia. This is important and most commonly come in competitive exam, SRF, GRF and ARS. उसको क्या करते थे, जो इमली निकलता था हमारा पका हुआ, उसको क्या करता था, वो सुखा देता था, ड्राई करता था, और इसको लोकली जो है उस एरिया में गोरू का पुली बोलते हैं। गोरू का पुली। गोरू का पुली। सो दिस फ्रूट्स कंटेन्स एसिड। व्हाट एसिड? टर्टेरिक एसिड। दिस फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो हमको खट्टा लगता है ना, वाई खट्टा? श्योर इतना खट्टा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो दिस मालाबार tamarind contains tartaric acid. So this dried Malabar tamarind we are putting into the abdominal portion of a cleaned gutted fish. अगर मछली है तो उसका जो बेली पोर्शन है वहां से इंटेस्टाइन सबको हटा लेंगे, हटा करके अच्छे से धो धा लेंगे और उसमें ड्राइड मालाबार टैमरिंड जो है उसमें भर करके छोड़ देंगे। देन भरने के बाद में वी आर स्टैकिंग इनटू द वुडन बैरल्स। बड़ा बड़ा जो ड्रम्स होते हैं वो लकड़ी का बना हुआ बैरल्स, एंड देन वी आर फिलिंग विद द ब्राइन का सॉल्यूशन, देन वी आर पोरिंग ओवर द फिश, देन क्लोजिंग एयर टाइट। अच्छे से उसको एयर टाइट कर दिया और फिर मार्केट में भेज दिया। अंडरस्टूड? मछली लेंगे, मछली का पेट फाड़ेंगे, वहां से इंटेस्टाइन, गिल्स ये सब हटा करके अच्छे से धो धा करेंगे,
उसमें ड्राइड मालाबर टमारिंड जो है उसके पेट में भर देंगे एंड देन वुडन बैरल में उसको टाइटली मतलब पैक करेंगे, स्टैक करेंगे. देन over that we are filling a brine solution and then we have to close watertight and then we have to mark it. Shelf life of Colombo curing is 6 months. Mona curing 50 days, 50 days, 20 days, Colombo 20 days. 6 months. Understood? Don't forget. And all these are the most important and most commonly coming competitive exam. Then coming to the how we can do the salting. So for that we require a salt. So we must have to identify what are the salts, what kinds of salt is available in the market and which salts we have to apply in which kind of product. So basically there is 4 kinds of salts. One is solar salt, then brine evaporated salt, then rock salt, then manufactured salt. These 4 different kinds of salts are there in the available. It is different kinds of salts are available in the market. Now I will we will go one by one. Solar salts, how it is prepared. So solar salts are prepared by evaporating a sea water or salt lake water. जो समुद्र का पानी है या सॉल्टी लेक है, उसका जो पानी है उसको हम सूर्य की रोशनी में छोड़ देते हैं. So there will be drying. So because of this drying phenomena, जो वाटर में जो सॉल्ट होगा वो कंसंट्रेट होते जाएगा. At the end there will be a solar salt. You will get solar salt, but here you will get a high impurities. सोलर सॉल्ट याद होगा हम लोग जब बच्चे होंगे, बच्चे तुम लोग तो थोड़ा अभी आए हो, मतलब ओल्डन डेज में भी बड़ा वो जो मतलब लंप ढेला वाला जो होता है ना, अभी भी आई थिंक मार्केट में अवेलेबल होंगे. नमक सर नहीं यार, अरे वो ढेला जैसा रहता है, उसको फोड़ा जाता है सर. वो भी रहता है सर. नहीं वो तो छोटा छोटा ढेला है, वो बड़ा ढेला है सॉरी. जो सोलर सॉल्ट होता है ना, जब हम समुद्र के पानी को सुखाएंगे तो यू विल गेट द सोलर सॉल्ट. या सॉल्टी लेक वो है, उसकी पानी को अगर हम सुखाते हैं तो यू विल गेट द सोलर सॉल्ट. दैट इज द सोलर सॉल्ट. ब्राइन इवोपरेटेड सॉल्ट जो है, दिस ब्राइन इवोपरेटेड सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट. वी आर अप्लाइंग ए हीट टू इवोपरेट स्ट्रॉन्ग ब्राइन्स which is pumped from deep mine. अंदर से उसको strong brine को लाते हैं and then we are evaporating by the application of heat. So जो salt बनेंगे, that salt is called as brine evaporated salt. Name itself indicate the brine we are evaporating by application of heat. So जो salt बनेंगे, that is the brine evaporated salt. Purity depends upon the underground deposit. जो अंदर से जो हम brine pumping कर रहे हैं, so it depends upon the how much impurity present in that brine solution in underground deposit. So that impurity depends on that. So this is second. Then rock salt is there. Deposit, sir. Rock salt is deposit ज्यादा. हाँ बोलो ना, क्या बोलो हम रहते हैं. सर लास्ट लाइन सर बोलो ना. डिपॉजिट अंदर ज्यादा रहेगा तो इम्प्योरिटी ज्यादा रहेगा. डेफिनेटली अगर उसके अंदर में पानी में गंदा रहेगा, सॉल्टेड है, ब्राइन है, लेकिन उसमें गंदगी ज्यादा रहेगी तो डेफिनेटली यू विल गेट द मींस हाई अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी. डिपेंड्स अपॉन दैट. क्वालिटी ऑफ ब्राइन विल रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ ब्राइन इवोपरेटेड सॉल्ट. ठीक है. ओके सर. सो रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट ऑफ वेरी मींस जो ये भी हम बनाते हैं, जो रॉकी मींस जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसके अंदर से हम वी आर टेकिंग द मींस अंडरग्राउंड डिपॉजिट एंड देन वी आर इवोपरेटिंग. सो यू विल गेट हियर 80 to 90% ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट का फार्मूला है NaCl. NaCl ही है या कुछ और है?
NaCl वही है सर। वही है। तो रॉक सॉल्ट में जो हमको NaCl की प्यूरिटी या मींस परसेंटेज मिलेगा 80 to 90%, रेस्ट ऑफ द 10 to 20% विल बी ट्रेस और इम्प्यूरिटी, यू कैन से अदर चीज मींस दूसरा चीज रहेगा उसमें। देन प्यूरिफाइड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, ये प्यूरिफाइड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट जो है, जो अभी हमने बताया, जो सोलर सॉल्ट है या फिर ब्राइन इवापोरेटेड सॉल्ट है या रॉकी सॉल्ट है, ये तीनों सॉल्ट से हम बनाते हैं। तो प्यूरिफाइड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट जो है दैट कंटेन्स 99.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो जनरली ये हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। अपने टेबल सॉल्ट बोलते हैं ना, थोड़ा सॉल्ट दो यार, इसमें कम हो गया है खाने में। So this table salt contain 99.9%. ठीक है? So this is all about the type of salts. Now, what are the impurities present in the salt? NaCl है, लेकिन जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो we will get some amount of impurities in the salt. So what are the impurities is there? So the major impurities are the sand and water. सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो रहता है वो सैंड और वाटर रहता है, फॉलोड बाय क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट मींस कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, these are the impurities. Then sulfates and carbonates of sodium, that means sodium carbonate, sodium sulfates and traces of copper and iron. These are the impurities present in the salt while we are preparing or manufacturing. Then if these impurities present, then what it will reflect in our product? अगर ये impurities रहती है तो हमारे प्रोडक्ट में इसका क्या इफेक्ट है? So presence of 0.5% of chloride and magnesium as a sulfate, that means this calcium sulfate or magnesium sulfate in salt can impart a desirable whiteness and rigidity. That means अगर 0.5% calcium and magnesium as a sulfate है, that means calcium sulfate और magnesium sulfate 0.5% भी present है, तो ये अच्छा है। ये क्या करता है? प्रोडक्ट को whiteness, उसकी ब्राइटनेस को वो बढ़ाता है एंड उसकी रिजिडिटी को मींस फ्लैश को देता है। बट at higher concentration it leads to excessive brittleness and bitterness. Two things, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट अगर लो 0.5% में है तो सर क्लोरीन है सर। मिस्टेक हो गया, मैं कैल्शियम बोल रहा हूँ वो समझो। ओके सर। ठीक है ना, कैल्शियम है, वो कैल्शियम है, मिस्टेक हो गया है, कैल्शियम टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट इंप्योरिटीज है 0.5% में, तो इट विल गिव डिजरेबल व्हाइटनेस एंड रिजिडिटी टू आवर प्रोडक्ट। बट यही इंप्योरिटीज अगर ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 0.5%, देन इट इम्पार्ट्स बिटरनेस एंड बिटरनेस। हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो जैसे ही हम सॉर्टिंग के बाद ड्राइंग करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस impurities. Then heavy metals is also there. Heavy metal salt impurities, especially the traces of copper and iron. Copper generally 0.5 ppm. Yes, copper, yeah, more than 0.5 ppm. Copper at the rate of more than 0.5 ppm, or iron more than 30 ppm cause undesirable yellow or brown stain in the product. अगर हमारा कॉपर, ट्रेसेस ऑफ कॉपर और आयरन की इंप्योरिटीज एट द रेट ऑफ इवन दो 0.2 to 0.4 ppm अगर कॉपर है और 30 ppm हमारा आयरन है सॉल्ट में, तो ये क्या करेगा? इट में लीड्स टू प्रोड्यूस अनडिजायरेबल येलो और ब्राउन स्टेन ऑन द प्रोडक्ट। अनडिजायरेबल येलो मतलब एक स्पॉट आ जाएगा, ब्राउन स्पॉट आ जाएगा। ये स्ट्रेन्स नहीं है, स्टेन हो है, ओके, स्टेन ऑन द प्रोडक्ट।
Most of the solar salt is a source of halophilic bacteria or halophiles, the microbes which loves salt. The solar salt is a source of halophiles. Halophile means Salt loving bacteria. salt loving microbes or salt loving bacteria की कहते तो ठीक है. So if we are using a solar salt, so that means solar salts harbors halophilic microbes. So this halophilic microbes is responsible to cause red or pink discoloration. Red or pink discoloration over the surface of the fish. So that we have to take care. Then based on the salt tolerance and the percentage of salt, the bacteria are classified into 3 groups based on the sensitivity towards salt. What are those? First is the halophobic. Halophobic means it doesn't like salt. It hates salt. Halophobic. उसको फोबिया है, हमको नहीं चाहिए सॉल्ट, लेकिन कुछ क्वांटिटी चाहिए उसके सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए. So this includes most of the pathogenic and putrefact types. Pathogenic, that means जो माइक्रोब्स हम में डिजीज कॉज कर सकता है और हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकता है. So halophobics are in this group. This pathogenic and putrefact microbes are in the group of halophobic. They can't grow more than 6% of salt. If we are applying in 6% or more than 6% of salt into our fish, so this pathogenic as well as the putrefact types of bacteria will not grow. So they can't grow more than 6% of salt. Example is the Pseudomonas species and Achromobacter species. Then another next example of classification of this salt tolerance bacteria is the halotolerant. The name itself indicates halo means haline, means salt, tolerant, that means bacteria or microbes can tolerate the salt concentration. So these include spore formers. Spore formers, that means bacteria which can form spores for their growth and survival. Spore formers, micrococci and some anaerobes, and can grow more than 6% of salt. Halophobic, they can't grow more than 6% of salt. They grow less than 6% of salt. Halotolerant, they can grow only more than 6% of salt and even up to the saturation. अगर हम saturation तक भी पहुंच जाए तो उसमें भी हमारा halotolerant bacteria उसमें grow करता है. So example is the Clostridium botulinum. क्योंकि Clostridium botulinum is the anaerobic bacteria, and brine we are also using in case of canny. So that's why this Clostridium botulinum, there is a chances that they may grow. Then another classification of the salt tolerance bacteria is the halophilic. The name itself indicates halo means salt, philic means loving. These groups are salt loving and can't grow in the absence of salt. मतलब अगर हम इसको salt नहीं दें तो ये मतलब जिंदा नहीं रहेगा. They can't grow in the absence of salt. And optimum growth at 20% of salt. They are not pathogenic. ये pathogenic नहीं है, but हमारा प्रोडक्ट को कुछ खड़ा भी करता है. वो हेलोबैक्टीरियम है, स्पीसीज है हेलोबैक्टीरियम सार्सिना स्पीसीज. Okay, so don't forget, you have to remember not only exam point of view, for your concept point of view, as well as for competitive exam point of view. Competitive exam especially JRF, SRF and ARS में ये सब common है. Okay, कुछ confusion? Otherwise I will have to अच्छा ये हमारा टाइम खत्म हो रहा है इधर, और फिर से मैं इसको ये करूंगा, सब ज्वाइन करेंगे. ठीक है? ओके सर. ठीक है ना? अभी ये एक मिनट बचा हुआ है, बंद हो जाएंगे, तो फिर से मैं ये कर रहा हूँ.
उसमें फिर से ज्वाइन करो।